Now you see question number 20 on page number 8.69. First point is proprietor withdrew for private use rupees 50,000 from बैंक. देखो है तो सिंपल सा ड्राइंग्स, बट जो अमाउंट विड्रॉ हो रहा है वो इस बार बिजनेस से ना होकर के बैंक से हो रहा है. ओके, तो जो गिवर है वो बैंक है. फर्स्ट पॉइंट, मार्कर चेंज करूंगा. ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड in place of cash. Now you have to credit bank. Now question will come in your mind कि why bank? Because money withdraw कर रहे हो बैंक से, तो गिवर कौन है? बैंक. और बैंक कौन होता है? पर्सनल अकाउंट. और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? क्रेडिट द गिवर. So that is why you have to credit bank. Amount is 50,000. 50,000 will come in debit and 50,000 will come in credit. Next point is goods costing rupees 2 lakh were burnt by fire. ठीक है, तो burnt by fire means once again this is your loss. This is loss by fire. Again it will be debited. Loss by fire account debit. अब फिर से देखिए, goods का लॉस हुआ है तो once again you have to reduce your purchases to purchases account. मैंने ग्रुप में मैसेज शेयर किया है वैसे कि कोई और पॉइंट अगर आपको नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो. कोई सभी अगर आपको कोई बेसिक से भी पॉइंट्स नहीं आ रहे तो भी आप पूछ सकते हो. नो प्रॉब्लम इन दैट, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू रिवाइज योर टॉपिक. गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 lakh वर बर्न बाय फायर, तो रुपीज 2 lakh विल कम इन डेबिट एंड 2 lakh विल कम इन क्रेडिट. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज. नेक्स्ट, purchase machinery for cash 1,50,000 and paid 2,000 on its installation. Capital expenditure, my dear. I told you in the class कि whenever we will purchase any fixed asset, so at the time of purchasing that fixed asset, whatever other expenses will be incurred, all those expenses will be added in the cost of that particular fixed asset. तो यहाँ पर आपने मशीनरी परचेज करी है, कैश में परचेज कर रहे हो, ये ध्यान रखना, 1,50,000 की, or immediately you are spending 2,000 rupees as installation expenses. So this 2,000 rupees will be added in the cost of machinery and your journal entry will be machinery account debit. Real account आ गया, simple debit. What comes in? Machinery account will be debited and to cash account. Once again, real account. Credit what goes out, but amount will be 1,52,000. एक तो कॉमन सी मिस्टेक जो बच्चे कर देते हैं वो ये कि 2,000 रुपीज इंस्टॉलेशन को अलग से लिखते हैं कि दिस इज आवर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस. यूजुअली जर्नल एंट्री लिखते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,50,000, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश, और एंट्री हो जाती है रॉन्ग. आपको ध्यान रखना है, दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो एट द टाइम ऑफ बाइंग एनी फिक्स्ड असेट, ऑल अदर एक्सपेंसेस विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ दैट फिक्स्ड असेट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज charge 5% depreciation on building costing rupees 2 lakh and 8% depreciation on furniture costing rupees 5,000. तो यहाँ पर आप अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो, और कंपाउंड करोगे तो अगेन यू हैव टू डेबिट टू डेबिट्स एंड 2 क्रेडिट्स आपको करने पड़ेंगे, बिकॉज 5% डेप्रिसिएशन आप बिल्डिंग पे चार्ज कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन इज योर वन ऑफ द एक्सपेंस, हेंस इट विल बी डेबिटेड. डेप्रिसिएशन on building account debit to building. This is your non-cash expense. Value of building will reduce. So value of building will reduce. Building is your asset. Asset जब हम परचेज करते हैं, जब asset की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं. यहाँ पर asset की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो जब asset की वैल्यू रिड्यूस होगी तो हमको क्रेडिट करना है टू बिल्डिंग. Because depreciation हमारा कैश एक्सपेंस नहीं है. We are not giving depreciation to any person in cash. Depreciation हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है. We are simply charging on building. Depreciation charge on building. Second entry, depreciation on machinery account debit to
machinery account. Same way you have to reduce value of your machinery. Alternatively, you can write depreciation on building account debit, depreciation on machinery account debit to building and to machinery. Value आपको calculate करनी पड़ेगी. 5% depreciation on building costing 2 lakh. This cost is of building. 2 lakh into 5% will be 10,000. It's 10,000. Okay. And 8% depreciation on furniture costing 5,000. है ना? This cost is of furniture. 8 5s are 40. 400. So like this you have to pass entries. Next is prepaid salary rupees 10,000. Prepaid salary. See, prepaid is your asset because you are paying money for next year. So prepaid salary will become your asset and value of asset will be debited when it will increase. यहाँ पर prepaid salary की value increase हो रही है तो you have to increase it and the value of salary which is your expense वो value decrease हो रही है. Whenever the value of expense will decrease, you have to credit it. That is why we are going to credit salary rupees 10,000. Remember insurance वाला point मैंने क्लास में डिस्कस किया था, काफी देर तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये उसी से मिलता जुलता पॉइंट है. Next is Kapil who owed us 30,000 became insolvent and nothing is received from his estate. तो that means हमारा amount bad debts हो गया और bad debts is our loss. All expenses and losses will be debited. So bad debts account debit and value of Kapil we have to reduce to Kapil rupees 30,000. Because further we are not going to receive anything from Kapil. Further we are not going to receive anything from Kapil. इसलिए we have to wind up account of Kapil. That is why we have to credit it. ठीक है, क्योंकि कपिल की वैल्यू हमें रिड्यूस करनी है, वाइंड अप कर देना है, तो कपिल को क्रेडिट करेंगे और बैड डेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज बैड डेट्स इज वन ऑफ द लॉस. तो आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 दिए. ठीक है, वेट फॉर सम मोर टाइम. थैंक यू.